Here we are, end of an exciting match, and Sri Lanka managed to cross the line and make it to that final day after tomorrow. It all started when Pakistan won the toss and put Sri Lanka in, and they managed to score 184. Quite a competitive score, with Pakistan getting very, very close, but so close yet so far. Sri Lanka winning this one by 6 runs. Lots to talk about in this. Quite a few performances to look at. And it'll be an exciting chat. Here we are with the pitch side. I'm Sikandar with you. So it's been a hard-fought game. They beat Zimbabwe by 9 wickets and then came in and beaten Pakistan by 6 runs. So is this the time? They're peaking at the right time, as they say. It'll be all out there day after tomorrow when the final comes. But before that, let's talk about this match. And for that, we have Saim Ayub and Ramesh Raja alongside us. Thank you, gentlemen, for joining us. We'll start with you, Saim. Saim, आज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. अच्छा एक्साइटिंग टिपिकल T20 मैच हुआ. 184 आपको लग रहा था एज अ साइड शायद 20-25 रन ज़्यादा चले गए? आई थिंक अगर टोटल के बारे में बात करें तो हम उनको 10-15 रन पहले उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट इस टोटल के बारे में भी हम कह रहे थे कि एटलीस्ट हमने उनको 200 या 190 नहीं करने दिया. और हमारा मोराल हाई था इस टोटल के बारे में, जैसी कंडीशंस थी, और हम कॉन्फिडेंट थे कि हम इसको चेस कर लेंगे. बट लॉट ऑफ पॉजिटिव्स के जिस सिचुएशन में हम पावर प्ले में थे उसके बाद भी टीम यहाँ तक पहुँची है, तो क्रेडिट गोज़ टू श्रीलंका कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की एंड में. बट देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिव के टीम ने हार नहीं मानी और एंड तक लेकर गए मैच को, जो जीत गए थे ऑलमोस्ट. आपकी अपनी बैटिंग के बारे में बात करते हैं. ऑब्वियसली जिस तरह से आपको देखा है मैच खेलते हुए, बैटिंग करते हुए, एग्रेसिव नेचर है, यू लाइक टू गो आफ्टर द बॉलिंग. किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? क्या प्रोसेस होता है? आप बॉलर्स को मार्क करते हैं कि मैंने इसको अटैक करना है पावर प्ले में? किस तरह से आप जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर मैच में? आई थिंक मैच में तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि पिच क्या कह रही है, उसके बाद बॉलर के लिहाज से शॉट सिलेक्शन होती है कि बॉलर किसी का एंगल अवे होता है, किसी का एंगल अंदर आ रहा होता है, किसी का बॉल फिर फील्ड के लिहाज से, तो उस चीज़ों को जहन में रखना होता है. लेकिन व्हेन द बॉलर इज़ बॉलिंग तो जस्ट इतना टाइम नहीं होता बैट्समैन के पास कि ज़्यादा सोचे, तो जस्ट वॉच द बॉल एंड रिएक्ट, और सबकॉन्शियस में कुछ एरियाज कुछ शॉट्स रख के एंड देन जस्ट रिएक्ट. We were talking about this while the match was going on. He looks like $1 million getting starts, लेकिन वो फिर वो convert नहीं हो पा रहे हैं big numbers में. So that's why मेरा question यही था कि does he have a license to go and just attack? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इनसे पूछें. नहीं, इनसे तो मैंने पूछा, इन्होंने वो जवाब दिया. But what do you feel watching it from outside? देखिए, मुझे जब ये आउट होते हैं ना, मुझे सख्त डिसअपॉइंटमेंट होती है और कोफ्त भी होती है. मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसलिए कि इनमें इतना पोटेंशियल है. ये हर दफ़ा पाकिस्तान को तने तनहा मैच जिता सकते हैं. तो मेरा आपसे साइम सवाल ये है कि कहाँ पे जाके, मतलब है मुझे ये T20 की बैटिंग की ना, क्योंकि मैं ओल्ड टाइमर हूँ उस लिहाज से, तो मुझे नहीं आइडिया है कि एक छक्के के बाद दूसरा छक्का भी मारना है और फिर तीसरा छक्का भी मारना है. ये क्या है? ये प्रेजेंट डे इसी तरह से T20 खेली जाती है, या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि जो आपको बॉल नज़र आएगा वो ग्राउंड से बाहर जाएगा? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट के जस्ट वॉचिंग द बॉल एंड रिएक्ट. तो अगर मैं आउट हो रहा हूँ तो मुझको पता होना चाहिए कि उस बॉल पे मैंने कोई प्रीमेडिटेट नहीं किया, या जो शॉट्स में नहीं खेलता वो मैंने खेलने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं की, तो वो मुझे पता होना चाहिए. और अगर मैं अपना प्रोसेस फॉलो करते हुए आउट हो रहा हूँ तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, या किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं आउट हो रहा हूँ तो मैं अपना प्रोसेस चेंज कर लूँ, एज लॉन्ग एज इट्स राइट एंड डिस्कस विद द कोचेज़. मगर ये मुझे ये बताया ना, जब मैं अगर 25 या 27 करता था तो मुझे अगले मैच में प्रेशर फील होता था. मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसलिए कि आप समझते हैं कि आप सेट होके आउट हो गए थे. जी जी. सो वो उसका ना, और जब 50 किया हुआ है तो फिर अगले मैच की थिंकिंग और होती है. सो मगर ऑब्वियसली आपका प्रोसेस है, आपकी एक उसमें क्लैरिटी दी गई है कि ये आपका रोल है और डिफाइंड रोल है. आपकी एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग भी इसको सूट करती है. बट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या जब आप यारों दोस्तों से मिलते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वो कभी बात करते हैं कि ये आप हर मैच में क्यों नहीं 50 करते हैं? यारों दोस्तों को तो फिर वो कहते हैं, तो मैं बोलता हूँ तुम लोग रोज़ जॉब पे क्यों नहीं जाते? खैर, उनको तो यारों दोस्तों और फैंस को तो वो तो जस्ट एंजॉय करते हैं, या कभी उनको दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है. लेकिन बैटिंग की जहाँ तक बात है, तो आप के ज़माने, अब पुरानी क्रिकेट जिस तरह टाइम के साथ ग्रो कर रही है, नहीं है वैसे, ठीक है, नहीं इतने भी नहीं है, लेकिन थोड़े से तो मेरे लिहाज से तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ. तो क्रिकेट जिस तरह ग्रो कर रही है, तो हमको मैच में डिफरेंस ये आता है कि हम सामने वाले पर अटैक किस तरह करते हैं, और वो छोटे छोटे कैमियोज जो एग्रेसिवली आते हैं, तो वो एक क्रंच मोमेंट जब टीम जीतती है तो उससे ही मैचेस बनते हैं. हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आराम से टाइम ले लें और उसके बाद हर टीम एंड में जाके आपको कवर करने का मौका नहीं देती है. आपको पता है, आप मिस सईद अनवर की झलक दिखती है, आपको लोगों ने कहा है
ऑनेस्टली लोग कहते हैं, मैं सुनता भी हूँ, बट मैं इस चीज़ को मतलब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. वो लेजेंड थे हमारे और मतलब मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन लेजेंडरी मानता हूँ. स्टेटस बनने का बहुत सारे जरासीम है. जी मैं चाहता भी हूँ इस चीज़ को, लेकिन वो एक रिज़ल्ट है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं चीज़ें अपनी फॉलो करता रहूँ, लेकिन दिलेरी के साथ फॉलो करता रहूँ, ताकि उसके रिज़ल्ट में मुझे जो मिल रहा है वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना. आपके रोल की बात कर रहे थे, जैसे T20 और बड़ा टूर्नामेंट भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि आप बॉलिंग पर भी थोड़ा बहुत डाला जाता है रोल के, आपने बॉलिंग भी करनी है. थोड़ा नहीं, बहुत. बहुत. तो अगर बहुत है तो एज एन इंडिविजुअल आपको लगता है कि अब आपका ध्यान दोनों तरफ बराबर करना पड़ा है, या बैटिंग पे उतना जो आप देते थे आप बॉलिंग पे भी देना पड़ रहा है? जी पहले ये था कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन या कुछ, मैं सिर्फ बॉलिंग को ऐसे ही इंजॉय कर रहा होता था. बट ये कोचेज़ आए तो इन्होंने बॉलिंग पे काम किया और बताया मुझको कि एक प्रोसेस दे दिया कि अपने इस तरह बॉलिंग करनी है, और लेफ्टीज़ को इस तरह, राइटीज़ को इस तरह, पावर प्ले में इस तरह, पावर प्ले के बाद इस तरह, एंड देन उस पर आप अगर मार खा लो या अच्छी बॉलिंग कर लो, उससे हमें इशू नहीं है. बट इस चीज़ को आपने फॉलो करना है. उसके रिज़ल्ट में जो भी आता है हम आपको उससे कुछ नहीं कहेंगे. तो आई थिंक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये यूज़फुल चीज़ है, और मैं चाहता भी हूँ कि अगर इससे टीम को हेल्प हो रही है तो मैं पूरा ध्यान दूँ. बड़ा आप एंजॉय करते हैं बॉलिंग का रोल? जी बिल्कुल. फील्डिंग में सिर्फ फील्डिंग नहीं, फिर बॉलिंग भी मिल जाती है तो एंजॉयमेंट भी हो जाती है. Good. Well, excellent. I mean, we hope you have a brilliant final day after tomorrow. Thank you for joining us. Inshallah. Thank you so much. Thank you, Ramzai. Well played today. Okay, so here we are. Now, time for us to take a short break. When we come back, we'll be joined by Russell Arnold and we'll talk more about Sri Lanka's performance. Welcome back to Pitch Side, talking about Sri Lanka's 6-run win against Pakistan and the qualification into that final day after tomorrow. A very happy Russell Arnold joins us. Russell, we were talking about this. Anyone, apart from the dependency on Pathum and Nisanka's opening or Mendes doing something, Kamil Mishara, I think, answered that question today. There are a lot of positives about Kamil Mishara, not only the fact that he got the runs to give Sri Lanka those that much-needed cushion, but from his point of view, for Sri Lanka's future, for the bigger picture, a young player playing like he did. From the time we've seen him, we've seen power. We've seen him one-dimensional. But today was very different. Along with some quality shots, he used a few touch shots, the singles, changing the angles, soft hands to pick up those, which makes him a complete player. And that's what confidence does for you. Now I think he'll realize this is how you score runs, and it will be better for him and also for Sri Lanka. But such an important knock, because with the pressure that they were under, everything had to be done right at the top. And he's done it brilliantly. Some beautiful shots, played spin well, and hopefully it's the start of many, many more knocks. I'm really excited about Kamil Mishara. You just feel that Pakistan may be a little bit of complacency set in because they felt that Nisanka is out for cheaply, got 2 wickets early, and they didn't expect, they haven't seen much of Mishara. Yeah, Pakistan didn't follow through. Actually, the advantage that they accrued in the first few overs didn't really materialize, and so it was a really smart innings. You know, it is impactful innings because he played the spin so well in the middle phase, and that's been the Achilles heel of Sri Lankans in this tri-nation. So, I mean, it's a tremendous innings, but Pakistan clearly gave away, I think, 10 or 15 runs more. Because, you see, looking at how they shape up in T20 eyes, anything over 180, 190 challenges this batting lineup. You talk about Chamira, again, a performer who've been talking about through and through in this series and before that as well. I mean, there's a question again with Dasun Chanaka bringing in that new ball. I mean, he's got pace, he's got everything, and started off with 3 for 3 in his 2 overs. Yeah, so Dasun Chanaka opened the bowling like he did previously, just to get through a couple, maybe if he can get a wicket. But Pakistan got on to him. So he had no option but to go to Chamira. And Chamira really did need to respond, and he did. 2 in the first over. It was Babar Azam and Shahizada Farhan who have been amongst the runs, leading them through. 3 wickets for 3 runs. Got the wicket of Fakhar Zaman as well. It was outstanding. Just what you needed from your fast bowler to dent the Pakistan batting lineup and put them under pressure. And in any smart, that's where experience comes in. His 3rd over went for 12 and he was bowling quick. And he was fast to learn that slower ones or taking the pace off will work, and he brilliantly bowled that last over, which worked for Sri Lanka. At that stage, it was Pakistan's game to win. 10 runs in that over. The way things were happening, the way the ball was flying all over, it was a very, very brave option that Chamira started with the initial leg cutter. Yeah.
And then after that, he started getting the ball into the block hole. The angles he worked were brilliant. There was no mistake at all other than in the field. But from Tamira's point of view, this was something extra special from him, because this win means a lot in the bigger context of Sri Lanka's tour and also leading up to the T20 World Cup. Yeah. I'm going to bring Ramiz's attention to something that you also noticed and talking about, and you were saying this to Siam, that in T20 grade, when do you let common sense prevail? When do you stop? So there were two incidences probably were game changers or match change or shifted towards Sri Lanka. One is Usman's dismissal and one is Nawaz's dismissal. Yeah, I mean, both got out after hitting a six. This was critical as well because finger was raised and you're not allowed that single because he was given out. And that really did hit Pakistan quite badly because Salman Aliaga would have been on strike. That single would have been credited to Pakistan. So little things that really didn't help Pakistan in the end. But yeah, you're right. I mean, Nawaz had hit a six, then got out the next ball. The keeper had hit a six, then he got out to the very next ball. And they were set batsmen. It's not that they just come in. So one was batting in the 20s, the other was in the 30s, and took a lot of risk against someone who is so full of tricks. We're talking about Hasaranga, and this hitting a six and getting out. And so that really did hit Pakistan quite badly at that passage of play. Well, I don't want to take anything away from Sri Lanka, the way they played the last two matches. But just to discuss a point in the rule of cricket, we'll leave it with you as the last question on the show today. We just saw that. Yeah. The decision, that's irrelevant, what the decision was from the umpire. But what follows after that, and in the context of the game, how important could have an impact on the result. What do you make of it? And can this rule be re-looked at? Don't think so. I think you've got to live with it. You've got to bite the bullet because, you know, there have been instances where things have gone pear-shaped, but this is lesser of an evil. Let's put it this way. Yeah. I mean, and so it did impact the game, but not that much. I mean, Pakistan still had a chance. It's not the first time we've seen such an impact with such a decision. The rule is that the ball goes dead the moment the umpire gives the batter out. Yeah. So the run doesn't count from there on. It was a bad call by the umpire. It was. That no doubt about it because it was nowhere near the pads. But the impact in the game there was, from Sri Lanka's point of view, a dot ball, and it also left Fahim Ashraf on strike. Yeah. It was Salman Aliaga who was striking it really well. Yeah. So that's where it was, I think it was 3 balls, 7 runs, became 1 ball, 7 runs because the next ball, Fahim Ashraf was out again. Would you make any changes or you let this 11 go? Anyone you'd like to this rule? No, I'm talking about the final. The finals. Final. The cold getting to me. I would consider bringing back Kamindu Mendis just to strengthen that batting. And maybe Nuwan Tushara for Ishan Malinga. Okay, and Pakistan? I mean, Pakistan would probably should stay the same. I mean, it was touch and go. I mean, they did drag this game right till the 20th over. I mean, they were down and out in the first 6. And so this is a good kind of a fight back. But, you know, playing at home, they were not beaten. And so this would be a little bit of a shock because we know that now Sri Lanka are just a game away of that massive upset. In a knockout situation, the pressure can be a devil. It's different. It's different now. Maybe Shaheen Shah Freed if he's fit. I mean, would you risk him? I mean, if he's not 100% or has not been 100%, then get him into playing the final. I don't know. All right. Thank you, gentlemen. Thank you for joining us. And here we are. So wrapping up this final game in the round-robin stage. And Sri Lanka made it to the final by a brilliant game, winning this one by 6. This is what you need to join us with. And that'll be on the 29th, the final, which starts our coverage, actually, from 5:25 p.m. local time from the Rawalpindi Cricket Stadium. Until then, you take care of yourself. Enjoy the weather. And it's good night.